देशे दशरथपुत्रो रामो नीतिं मानितवान् तथा च रोमानगरे रम्ये सीसरगस्टस् राजाभूत् निजसाम्राज्ये सर्वे लोका शान्तिसमेतं जीवन्ति तस्मिन् समुचितकाले जातो बेद्लहग्रामे देवसुत दीनदयालु सः पापविमोचक नरकुलरक्षक शत्रुहर देहि विभो परस्नेहवरं दे पाहि किरातकराळकरात् अजपालगणानक्तं गगने दृष्ट्वा तेजोमयदृश्यं विस्मयकोटिं प्रावुरधापि मङ्गलवार्तां शृण्वन्ति इह ग्रामे वो जातो रक्षक युष्मान् त्रातुं देवसुत गच्छद वेगात् तेजोबिम्बं दृष्ट्वा सर्वे हृष्यन्तु तृणशय्यायां जातजनेश्वर शान्तिं देहि सदापि सते देहि विभो परस्नेहवरं दे पाहि किरातकराळकरात् गच्छन्द श्रुत्वा गीतं विस्मयचित्ता जातास्ते विद्युल्लेखा समकान्तियुता दूता उच्चैर्गायन्ति उन्नतस्वर्गतलेषु सदापि सर्वेशाय स्तुतिरस्तु मर्त्यानां शुभचित्तानां भुवि शान्तिर्भवत्विह सर्वेषां देहि विभो परस्नेहवरं दे पाहि किरातकराळकरात् शालान्तर्निविष्टालोक्य शशिबिम्बसमं शिशुं मुदा माधुर्निगडे कर्पटतल्पे शयानमद्भुतवाग्दानं समेत्य नत्वा समर्पयन्ति अमूल्यव्रजगदरत्नानि प्रसन्नचित्ता गोपालास्तदयान्ति वदन्तो नववार्तां देहि विभो परस्नेहवरं दे पाहि किरातकराळकरात् पौरस्त्यागतकोविदपूजां काञ्चनसुरभिलद्रव्ययुतां स्वीकुर्वन् शिशुर्मोदमवाप तातो माता हृष्यति च हेरोदाज्ञा खड्गात्रातो मिस्रेन् देशं नीतसुत समुचितकाले प्रत्यागत्य नस्रत्ग्रामे गृहे वसत् देहि विभो परस्नेहवरं दे पाहि किरातकराळकरात् प्राप्ते 12 वयसि सः बाल पुरुहुदसोळमदेव गृहे गत्वा दृष्ट्वा विस्मयचटुलं जित्वा पण्डितवेदविद प्रत्यागत्य पितुर्गेहं पुनर्देशान्तरसञ्चारं कुरुते तथा नळन्दां तक्षशिलामपि उत्तमविद्याक्षेत्राणि प्राप्य निबोधति जीवितसारं स्निह्यदयूयं परस्परं देहि विभो परस्नेहवरं दे पाहि
पठिषुर्वेदान् मेधावी स वेदाङ्गानप्यधिगतवान् मैत्रीं करुणां सङ्घं शरणं ध्यानं योगं शीलितवान् 30 वयसि जगाम स्वदेशं तपो विधातुं मरुस्थले तत्र पिशाच प्रलोभमतीत्य स आरेभे चिरनरसेवां देहि विभो परसिंहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् अजयूधोय पालकरहितो भ्रमति व्यथाशङ्गाकुलिता तथा ह्यमुत्र प्रजा समस्ता चूषणमर्दनपरतन्त्रा करुणामय परदीनदयालु स उद्धर्तुं तान् दृढचित्त दुःखनिमग्नान् निन्दितवर्गान् सुखिनः कर्तुं सान्त्वयति देहि विभो परसिंहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् भूतप्रेतगणग्रस्ताश्च प्राप्य सुबुद्धिं नृत्यन्ति अन्धः पश्यति पङ्गुर्धावति सर्वे गुरुमनुगच्छन्ति एतद्दृष्ट्वा दुष्टपुरोधस तस्मै बहुशः स्पर्धन्ते योजनसेवानिरतविरक्तो दुर्मदिरनिशं गर्हति तं देहि विभो परसिंहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् देवालयमधितिष्ठति तस्करवैदिकवृन्दो वित्तार्थं मोषगचूषगपरिषदशङ्गं धर्मिष्ठा इव चरति सदा कश्चन विधवा भवनं ग्रसति शुभवस्त्रावृतवृगा इव धवलीकृतशवचारुकुटीर ननु ते मार्गे विहरन्ति तादृशकाले सत्यस्य चिरं साक्षी भवितुम् उद्युक्त देहि विभो परसिंहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् यथार्ककिरणवुलूकस्यास्ति अधर्मिणां परस्नेहवर वैदिकवृन्दोऽयतदगूढं रोषाधर्तुं देवसुतं शिवोऽहमीशसुदोऽहं वदति ईश्वरदूषणमेतद्धि इत्यतवत्यो मानुषबन्धु इत्थं वादं कुर्वन्ति देहि विभो परसिंहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् बुभुक्षितेभ्यो भोज्यं दानात् अमृतोपमभाषणधोरणिभिः बहुभूरिजना देवसुतस्य अनुगामिन एवाभूवन् अत एवान्धतमश्शक्तिस्तं दीप्तगुणं विनिहन्तुमना कपटतयाखिलतन्त्रान् कृत्वा शिष्यानपि दुष्प्रेरयति देहि विभो परसिंहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् नरतदितापम् अपनीयान्ध्यं
दूरीकर्तुम् अवतीर्णं दुरया कृष्टपुरोध प्रमुख शत्रुं मेने नरमित्रं स्नेह केवलमिह शाश्वतमिति वरिष्ठमन्त्रं व्याहृत्य स्निह्यत शत्रुं प्रार्थय रहसि नवीनमिति गुरुशुभवचनं देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् धनलोभिनमथ शिष्यं यूदं किङ्करमलभदवैरिगण गुणवारिधि गुरुर्धनलोभिनमुदशासितवानपि दुर्बुद्धि त्रिंशद्रूप्यकनिधिमुपलभ्य सख्यं शत्रुगणे कुरुते वैदिकयूथो जग्राहनिशि नाथं रविमिव राहुर्दिने देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् वञ्चितचुम्बनदिशितं नाथं शान्ततमं बहुमानार्हं कैये भास्फटनिकरो नक्तं न्यायसभायां नयति द्रुतं कल्मषहीनं देवसुतं जनपूजितमाशु निहन्तुमन पुनरभिभाषणदूषणमस्मिन् आरोपयितु यदन्तस्ते देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् नित्यनिरामय नारायणसुत शिवरूपोऽहमवध्योऽहं मम देह खलु देवालयमिति कृत्वा पुनरपि जीवामि अहमेव परब्रह्म सत्यम् ईश्वरनिन्दावचनानि श्रुत्वा भित्त्वा वस्त्रं रोषात् उच्चैर्वैदिकविधिमूचे अद्य हि वध्यो हन्तुं नयत एनं पीलातोऽसविधे देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् पृच्छति तं न्यायाधिपश्रेष्ठ जरुसलपुरराजोऽसि किं साक्ष्यार्थमहं सत्यस्यागत नहि मे राज्यं नश्वरभू मानवचेतसि नित्यं वासं कर्तुं भूमावतार साधुजनस्य परित्राणाय च जातोऽहं न हि भीरुजन नीतिविशारद पीलातोऽसत ऊचे निष्कन्मष एष देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् पुरोहितवृन्दश्च जना आलयभित्तिं भित्त्वेव आक्रोशं ते कुर्वन्त्यखिला अवसारयतातं मधुना अवसारयतं मधुनैव अवसरवादी पीलातोऽसथ नीतिमतो दण्डं दातुं निश्चित्यगतो रहसि विचारं कर्तुं जनरोषात् भीत्वा देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात्
प्रेरितरोमाभटकृतघोरकशाहदि क्लिष्टं तं न्यायाधीश समीक्ष्याह भृशं पश्यदमानुषमतिशोच्यं जर्जरितन्निणरूषितदेहं पश्यन्नपि जन पुनरवदत् अपसारयतात्तं तस्य निणम् अस्मभ्यं शुभमावहतु देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् नीतिमतोऽस्य विशुद्धे रक्ते कोऽप्यंशो मम न हि भूयात् इत्युक्तो प्रक्षाल्यकरौ क्रूशारोपणविधिमूचे शत्रुजनास्तिमिरावृतचक्षुष सहसा हृष्टा नृत्यन्ती खादुकहस्ते अजवल्सैव फडनीतश्च पवित्रात्मा देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् निशम्य वार्तां गुणभोक्तारो वधगिरिवीथिगता शिष्या रोमा सैन्यसमक्षं शत्रवगर्हन्दस्तं निन्दन्ति गुणकारिणमिह करुणापूरम् अधुना बिभडः पीडयति कृशभारेण पतितं नाथं दुष्प्रेरणया ताडयति देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् अस्माकं दुरितेषु विपत्सु च कदनापूरितमार्गेषु जीवितयात्रां नयमानानां शक्तिं बुद्धिं देहि विभो अबहाय व्यथां स्थैर्यं दत्त्वा अस्मान् पाहि दयापूर्वं मर्त्यकुलस्य परित्राणाय हि पीडां सोढवदे स्वस्ति देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् भक्तस्त्रीगणमध्यगता सा माता तिष्ठति कृशमार्गे सर्वाङ्गं निणरूषितपुत्रं विलोक्य माता विलपदिह पुत्रमरिष्टदिनेषु विनोनं पालिदमत्र व्यधाक्रान्ता अन्योन्येरितदृष्टिसशोका सर्वान्तर्गतसंक्रमणं देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् निशितखड्गविभिन्नमिव तव हृदयं प्रणितमभूदम्ब तदापि पुत्र सान्त्वयदित्तान् जरुसलनगरे मातृगणान् आगामिनि काले जगदीश्वर परिपालयतु विपत्सु सदा सदैव भूयाच्छान्तिर्भुवने सर्वजन सुखमाप्नोतु देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् क्षुधया व्याघ्रो अजबालमिव दुरया पीडितदेवसुत वैदिकनिन्दापात्रो
सन् आशीर्वर्षति लोकेषु क्षमया जयति समस्तं लोके असिनारणभेरि दुरन्दकथा आर्तत्राणपरायणनाथ अस्मान् पाहि परद्रोहात् देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् काल्वरिमकुटे कृशमरणाय नीदः पावनदेवसुत क्षिप्तवस्त्रसकृशारोपित तस्करयुग्मान्दर एव नारीमणिगणमध्ये रोदनमुच्चैर्भिद्यति व्योमतलं क्रूशारोपितसूनुं वीक्ष्य च मूका माता मूर्च्छदिह देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् तस्करवीरः कुशाद्वदति दर्शयतावगसिद्धिमिह अपरश्चोरो याजन्नाह तव राज्यं नय मां दयया तस्मै मुक्तिं प्रददाय शमि पुनरिह मात्रे इत्यवद कृशनिकटस्थो मम शिष्यो हि मातः पुत्रस्ते भवति देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् बहवः शत्रव परितक्रूशं जल्पन्ति परिहासपरा दर्शय रक्षामिह ते रक्षक अधुना त्राहि स्वयं नाशात् यदि देवसुतस्त्वमसि क्रूशात् अवतर शीघ्रं पश्याम तदा दया परपितरमया च अज्ञदया कृतपापं वर्षय देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् जगदीशसुत परिपावन नर परिहारार्थं पापस्य चोराभ्यां सह दारुणमरणं व्रियते शान्ततमस्तत्र तदातिदाहादुच्चैर्विलपति विभासितोऽहं पितर्मम किमर्थमेवं जहासि मामिति निरुपमचरमव्यथाकाले देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् पूरयितुं स पितृपावनहितमियेष तृषया मृदिकाले अधुना मानां तव हस्तेऽहं समर्पयामि इत्युक्त्वा तिरश्च प्रणमन् प्राणान् त्यजति अहोधरापि प्रगम्बिता देहि विभो परस्नेहवरन्दे पाहि किरातकराळकरात् सूर्योदिवितमसावृतभूमौ भीता गिरिगत सर्वजना तत्र शिलाचयमुच्चैस्तृट्यदि यवनिगभित्तिर्भिनत्ति गृहे आह निरीक्ष्य भटाधिपसकलं साक्षाद्देवसुतोऽयं हि नररक्षाबलिसाक्षी सत्यं
पददिशताधिप सर्वेषां देहि विभो परसिंह वरन्दे पाहि किरातकराळकरात् मानवरक्षा हेतोरेव आत्माहुतिकृतमित्रवर समस्तलोकाभ्युदयो जीवितगुरुवरलक्ष्यं ते भूमन् स्नेहेन तथा शान्ततया च नवनीतिं त्वं दर्शितवान् स्वरदीपोऽसि समस्तजनानां शरणं देहि सदापि सदे देहि विभो परसिंह वरन्दे पाहि किरातकराळकरात् गागुल्तामुकुटे कृशे पितृसुतं संवीक्ष्य सञ्चिन्त्यताम् लोकानां दुरितापवारणमहो आत्मार्पणं शोभनम् आर्तत्राणपरायणा सुकृतिनो जीवन्तु लोके चिरम् ईशो नाथ दयानिधे तव वरम् मे देहि त्यक्तुं स्वयम् ईशो नाथ दयानिधे तव वरम्